Okay, so today, today we are going to do article of association, and the article of association is a document that contains purpose of a company as well as duties and responsibilities of members. It is an important document that needed to be filed for registration purpose. Contains the rules and regulations for the internal management of the company, and article of association needs to be filed by the registrar of company, and article of association can be altered from time to time. So if we look back to memorandum of association, that was specifically for uh, outside of the company, the rules and regulations that they set, the policies that they discuss, those are actually for outside the company. Whereas if we talk about the article of association, so it is about the rules and regulations, the responsibilities they make. All of them, all these things are basically set for the members of inside a company. Now let me draw uh, a sketch which will actually help you out in memorizing the concept and the difference between article of association and memorandum of association. So let's suppose these two circles are actually companies, and when company sets some rules and regulations outside the company, for the people who actually are not part of company, and then it wants them, like those who are outside the company, and they want them to know certain policies. They set certain policies and then they want them to know, and they write in memorandumization. Then this is actually called article of association, right? So this is called article of association. This is sorry, a memorandum of association. So what happened? Like I didn't get the free pen. Let me make okay. So this is MOA, right? Because a company is setting policies for outside members, for the people who are not a part of company, and article of association when rules and regulations, responsibilities, um, and other purpose of a company, right? Everything has been discussed and written down for the members of a company to read and to follow. It's called article of association. Sorry, ignore my pencil writing because it's, although it's a free pen, but it's difficult to write. So memorandum of association and article of association, another difference between them is that MOA cannot be altered. You cannot bring any change right away. It's not that easy. But in article of association, whenever it's necessary, changes can be made, and then they can be rectified, right? Okay, so how to remove it now? Okay, what's wrong with this pen, this tool? I have to just I just have to erase this tool. It's again over and again. Okay, it has been erased, I guess. Okay, okay, okay. Well, so now here comes the next one. Let's move towards the next slide. In the next one, they are discussing some contents of article of association, like what article of association exactly possess. It possesses share capital, payment calls, transfer, line conversations, transmissions, for features, etc. of shares, share certifications, and warrants, rights of shares holders.
meetings, accounts and audits, winding ups, indemnity, appointments, qualifications, power, etc. of board of directors. Now, article of association contains like l- let me give you a clear picture of the things that it possesses actually. So it's like whenever they actually adoption of preliminary contacts as well, like whenever you are going to make any contact for persons, for example, the contact for like you may contact some shareholders for a reason to sell your shares. So this type of contact that you are going to build with them, it's non-preliminary contact, and you also are going to write about this, like how, what would be the approach, how you are gonna contact them, everything you are going to write over here. Number and values of shares you are gonna write, like how many shares you are going to release in the market, and what would be the worth of one share. So that is something, the information, this is type of information you are going to write over there. Then issues of preference shares. Now there are two types of shares: ordinary shares and preference shares. And for preference shares, like you have certain regulations, you have certain policies, like how much dividend you are going to give them, how much priority you have to give them. You have to give them the dividend quarterly, annually, or what your approaches are. So you will write over there so that your shareholder can easily read, and they must know like what are what exactly the perks that they are going to enjoy in the preference share, in case if they are the preference shareholder. The allotment of shares, how you are going to allot shares to whom and how much, and everything about this. Call on shares, sometimes you place a call on shares. Like you contact your shareholders, sometimes you get them back. That is another thing which is known as buyback of shares. So whenever you actually like feel like that the company already has a lot of capital, and they feel like we need to buy our shares back, then they place a call and they buy back all the shares, and they pay the shareholders in response. Okay, so this is also like what your policies would be in case of buying back of shares. Then you are going to write about this as well in your article of association. And then transfer and transmission of shares. Now there is some difference between transfer and transmission of shares. Like a share gets transferred from one person to another person when they buy or when they sell it. But transmission is something like it also gets transferred, but it gets transferred after the death of the person. Let's say एक बंदे की विरासत में फिर उसके बच्चों को या उसकी बीवी को या किसी और को वो शेयर मिल जाता है उसके मरने के बाद, तो वो ट्रांसमिशन कहलाती है। तो इन दोनों केस में आपकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, आप कितने पैसे देंगे, किस तरह से देंगे, वो किस तरह से क्लेम करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन करेंगे। नॉमिनेशंस, कोई बंदा नॉमिनेट कर देता है। नॉमिनेशन यूजुअली इस टाइप टाइम पर होती हैं जब फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई शेयर होल्डर है जो आपकी बोर्ड ऑफ मीटिंग में नहीं आ पा रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रॉपर सिलेक्शन हो रही है या समथिंग लाइक दैट, तो वो अपना नॉमिनी को भेज देता है, वो जाके मीटिंग अटेंड करता है, वो सब कुछ सुनता है, उसके बिहाफ पर अपनी वैल्यूबल जो फीडबैक है वो देता है, और वापस जाकर वो शेयर होल्डर को, जो मेन पर्सन होता है जिसने नॉमिनेट किया होता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें फिर शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में भी सारी डिटेल्स इसी में होती हैं। और डीमेटेरियलाइजेशन हो गया, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स। देखिए, शेयर्स को स्टॉक में बदलना मतलब ये कि शेयर्स इंडिविजुअली एक शेयर होता है, स्टॉक जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ शेयर्स होता है।
तो वो जो आप चेंज करते हैं उसका स्टॉक में चेंज करते हैं, ये इसकी सारी पॉलिसीज, इसकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, वोटिंग राइट्स हो गए आपके, प्रॉक्सीज हो गई। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी इसके अंदर जो है कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस होती हैं। सो एक और बात दोबारा से माइंड में रख लें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस जो हैं वो नहीं हो सकती, ठीक है। कोई अगर चेंज ले आता है तो उसको वॉइड कंसिडर किया जाएगा, वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट देयर इज नो चांस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर एनी टाइप ऑफ alteration. So it can be altered with special resolutions or solutions. Approval of the central government for conversion of company from public to private, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा जब आपने कन्वर्शन करनी हो कंपनी की फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट में, जब आप ला रहे हैं तो स्पेशल आप एक अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड नॉट वायलेट प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी लॉ बोर्ड। अब पता है क्या कहते हैं, देखिए एक मेन चीज़ ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। बहुत ब्रॉडर लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ डिफाइन कर रही है, उसने एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे आपके सारे रूल सेट कर दिए हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल आप ब्रेक नहीं करेंगे, अगर चेंजेस भी आप ला रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो गोल्ड मिशन विजन जो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाए। दैट वॉन्ट बी दैट वॉन्ट बी that won't be acceptable. So special resolution passed or approved by central government must be filed with the registrar within 1 month। फिर 1 month के अंदर वो बता रहे हैं कि उसको आपने जो गवर्नमेंट से पास करवाया उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार से। So these are the things when you actually have to alter, um, you have to make alterations। अब लिमिटेशंस क्या हैं हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मैं इसमें एक छोटी सी डायग्राम बना के बताती हूँ कि किस तरीके से हाउ इट वर्क्स। Okay, so again we have this is MOA, Memorandum of Association, and here we have Article of Association, right? So for MOA, it's like for MOA you can't rectify, right? You can't make any changes. For Article of Association, changes are possible. So this is uh, text. If I white, it's MOA, Memorandum of Association, whereas here we have Article of Association, right? So these the changes in Article of Association can be rectified. It's it would be as you can rectify it, but for a memorandum of association, it will be considered as void. So you can't make changes in you can't make any change in memorandum of association, whereas in article of association it's like it's approvable to ratify, but also you have to take care that you may not like it's very important that you may not bring any change which actually affects your article of which may not change your article memorandum of association. Also memorandum of association is a broader one,
Like if you talk about memory, it's a broader thing. It's a bigger thing. And if you talk about articleization, it's a smaller thing, right? So that is the difference between memorandum association and article of association. I hope it's clear now. Okay, so let's move towards the next one. Now, what are the limitations? The alteration cannot be made so as to increase the liability of members without his or her written consent. So alterations cannot be made without written consent, right? If you have to increase liabilities or make any possible changes, you can't do that without the written consent. लिखा हुआ consent आपको चाहिए अपने members का. Limit the number of members to 50, right? Prohibit any invitation to the public to subscribers for any share in or debentures of the company, right? Restrict the right to transfer shares. आप ऐसा नहीं कर सकते. लिमिटेशन ऑफ आर्टिकलाइजेशन के. अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपको हर हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. आपको रिस्ट्रिक्ट होगा राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स, राइट? So these are some limitations that a person needs to take care about while making changes in article of association. So when we discuss the difference between memorandum of association and article of association, so it is a charter of a company. अच्छा, चार्टर इसको वो भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. सो एक ऐसा चार्टर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिटरमाइन करता है और एक्टिविटीज़ के बारे कंपनी की एक्टिविटीज़ को फर्दर एलेबरेट, एक्सप्लेन और इन्हांस करता है. Article of Association, it contains rules and regulations regarding internal management of the company. इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए जाते हैं इंटरनल मैटर के. कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कवर करता है, राइट? सो मेमोरेंडम एसोसिएशन आउटसाइड द कंपनी, it enhances or determines the constitution. It is the charter of a company, whereas Article of Association describes the rules and regulations and internal matter or internal management regarding the internal management of the company. Now, the second one, every company must have a memorandum. It is very important for a company, for registration even, to have a memorandum of association. Whereas public companies limited by shares may or may not have article of association. So for public companies, so those companies which belongs to government, these are public companies. So public companies may have article of association and they may not have it. So they have the liberty of not having article of association, but memorandum of association is important for each and every company to have. It's very important. Alteration of memorandum is much difficult and strictly regulated. So in memorandum association, it's nearly impossible to make any alteration. कोई change लाना थोड़ा सा impossible ही कहलाएगा. आप इतनी आसानी से change नहीं ला सकते. Whereas in article of association can be easily altered by a special resolution. So एक special resolution pass करके आप article of association में change ला सकते हैं. और एक ये मेन चीज़ रखनी है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हटकर कोई ऐसा एक्ट कर दे जो उसके स्कोप से बाहर होगा तो वो वॉइड कहलाएगा. जबकि आर्टिकल सॉरी मेमोरेंडम एसोसिएशन से हट कर हो तो वो वॉइड कहलाएगा. जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हट के कोई एक्ट हो जाए, एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड by the shareholders, whereas acts done beyond the scope of memorandum are void. So उनको void और null consider किया जाएगा. So ये इनका legal effect होगा. Secondly, the preparation and filing of memorandum of association is compulsory.
And the preparation of article of association is not compulsory. Company may adopt टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट्स, तो वो फिर आगे फर्दर टेबल एफ भी अडॉप्ट कर सकती है कंपनी. एंड इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी का रिलेशनशिप बताती है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. तो MOA जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड रिलेशनशिप बताती है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इनसाइड द कंपनी रिलेशनशिप बताती है, कंपनी विद द मेंबर्स, कंपनी का मेंबर्स के साथ. Alteration in memorandum of association is a lengthy and difficult process. The approval of the government is necessary for alteration for memorandum of association, whereas article of association is an easy task and simple process. For alteration, the approval of the government is not so necessary. And the last one is defines the relationship between company and outside, and defines the relationship between management and the shareholders. That's the same thing that I was explaining a minute ago. Okay, now in the incorporation stage, what you have to do is to formate and incorporate. Now you need to take following items in your hand and submit to SECP for further process and establishment of your desired company. अब MOA आपने कर लिया, वो submit करना है आपने. AOA you have, it depends whether you are submitting it or not. And then in the incorporation stage आपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली सबमिट करने हैं SECP को फॉर फर्दर प्रोसेस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर डिजायर्ड कंपनी, कंपनी बनाने के लिए और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए. द सेकेंड स्टेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड. अब सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे किए, आपने इनके बारे में सब कुछ लिखा, और सेकेंड में आपने क्या किया is the for the form the second stage for formation of companies to get the companies registered, and for registration of company following documents are submitted. रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आप रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट जो नीचे दिए गए हैं ये सारे सबमिट करेंगे कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए. तो द फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. लेट मी हैव अ स्पॉटलाइट फॉर यू. Okay, so the first one is memorandum of association. The second one is article of association. The third one is nominal capital value or from of capital amount that you have. You have to submit how much capital amount you have. You have to keep a record. You have to submit a record of that. Special power of attorney on stamp paper. पावर अटर्नी आप बताएंगे किसके नेम पर है, स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर लिखकर. Covering letter, like what you have to write all the details. It's a cover letter, the same as you write the cover letter for your job. You have to write a cover letter. List of directors, उसमें आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने लिस्ट डायरेक्टर्स की बता देंगे. ओरिजिनल फी चालान, चालान फी जितनी है. कॉपी ऑफ वैलिड CNICs और प्रोमोटर्स और एंड विटनेसेस, उस टाइम पे जितने आपके विटनेस हैं, जो आपके प्रोमोटर्स हैं इस कॉज में, हाँ उन सब की आप CNIC प्रोवाइड करेंगे. डिक्लेरेशन में आप नेम की अवेलेबिलिटी, सर्टिफिकेट्स. देखिए नेम की अवेलेबिलिटी तो आपने पहले चेक करनी है ना कि इस नेम जो आप नेम रखना चाह रहे हैं उस नेम की कोई और कंपनी तो नहीं है वहाँ पे मौजूद. तो नेम एबिलिटी, चेकिंग द नेम एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You have to set a unique name for your company because names are already patented.
सारे नेम्स वगैरह फिर फर्दर पेटेंटेड होते हैं। और जो इवन नेम है आपका, फिर आपकी जो ब्रांडिंग है, जो वो है कंपनी का लोगो है, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं। वन कैन नॉट जस्ट स्टील नेम राइट अवे। कहीं से भी कोई उठकर अपने प्रोडक्ट के लिए यूनिलीवर नाम नहीं रख सकता। कहीं से भी कोई प्रोडक्ट उठ के अपने प्रोडक्ट, लेट्स से कोई शूज़ की कंपनी खुल रही है और वो लेते हैं जी एप्पल शूज़। नो, एप्पल इज़ ऑलरेडी पेटेंटेड, एंड इफ़ इन केस दे वुड डू सो, सो उनके ऊपर बड़ी हाई चार्जेस जो हैं वो लग जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर when it was a जलसा इन आई गेस बलूचिस्तान में एक जलसा था जो कि अरेंज किया था इन सिंधियों ने। तो सिंध लोग, सॉरी बलूचिस्तान कह रही हूँ, सॉरी इट वाज इन सिंध। सिंध में सिंधियों ने एक जलसा अरेंज किया था और जरदारी के वक्त में हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इसका अब जो भी आप कह रहे होते हैं इसका लोगो शोगो बनाते हैं, आप ब्रांडिंग करते हैं, उसकी पम्फलेट्स छप रहे होते हैं। तो उस टाइम पे भी ना यही कुछ चक्कर हो रहा था। लेट मी शो यू कि किस तरीके का उन्होंने अपना लोगो बनाया। सुपरमैन का लोगो कुछ इस तरह होता है, राइट? ये एस लिखा होता है और इस तरह यहाँ पर रेड कलर का एस होता है और ये उसको ब्लू कलर का एक ट्राइंगल से कवर हुआ होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह का ये जो है इसी तरह का रेड कलर का एस बनाया क्योंकि सिंध था। तो एस से सिंध एस बनाया और ये जो ब्लू कलर था ना इसको अजरक बना दिया। ठीक है, अजरक बना दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब इसकी ब्रांडिंग की, उन्होंने केबल पे लगाए, टीवी चैनल्स पे इसके एडवर्टीजमेंट लगाए जी सिंधी का गाना चल रहा है और साथ में जी ये वाला बड़ा जलसा होने वाला है। वो इतना चला, इतना प्रमोट हुआ सोशल मीडिया पर कि जी चला गया जी इस जो हमारे सुपरमैन वाले हैं उन लोगों तक इसका लोगो जो है वो पहुंच गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर इसके ऊपर बहुत ही हैवी $1 million का चार्ज लगा दिया कि इन्होंने हमारा लोगो चुराया है। तो फिर क्या हुआ, लाइक अदर अब या तो ने वो जलसा करना था और उन्होंने उसमें $1 million रुपए जो थे वो पे करने थे इन सुपरमैन वालों को, या दूसरा हल फिर उनके पास ये था कि वो ये लोगो ही अपना चेंज कर दें। उन्होंने कहा भाई ऐसे जल से जिसमें ये लोग कुंडे डालकर बिजली तक चुराते हैं तो उसमें ये इतने $1 million एक लोगो के लिए क्या पे देते। उन्होंने फिर अपना लोगो ही चेंज कर दिया। सो this is the intensity of copying that you can't do for any company from any company। आप नहीं चुरा सकते। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एप्पल की। एप्पल फ़ोन का जब सॉफ्टवेयर था वो बना रहा था पहले सैमसंग। सो सैमसंग की कंपनी फिर लेटर ऑन इट डिसाइडेड कि जब हम लोग इनके लिए बना रहे हैं तो हम क्यों ना फ़ोन्स बना रहे हैं एंड्रॉयड वगैरह। तो इन्होंने फिर अपना इंट्रोड्यूस किया और अपना इन्होंने जो अपना फ़ोन बना लिए। ठीक है, फिर कंपनी में ले आए, मार्केट में ले आए। अब जो फ़ोन आया तो इट हैड अ स्विप इफेक्ट। किस तरह फ़ोन खुलता है यहाँ पर, वेट अ मिनट, लेट्स से ये हमारा फ़ोन है, राइट? अब इस फ़ोन में जब कॉल आती है तो एक तरफ इस तरह ग्रीन सा होता है, एक तरफ रेड सा होता है। अगर हम इसी को स्विप करते हैं इस तरफ, ठीक है, ये जो हम यूँ हाथ से स्विप करते हैं तो इधर से खुल गया और यही हमने यहाँ से इस तरफ स्विप किया तो ये इस तरफ से बंद हो गया। तो ये जो स्विप इफेक्ट है ना ये कहलाता है रबर बैंड इफेक्ट। सो ये इंट्रोड्यूस किया था एप्पल वालों ने। तो इन्होंने भी अपना जो फ़ोन बनाया तो उसके अंदर जो कॉल अटेंड होनी है वो इस तरफ जा रहा है, जो कॉल रिजेक्ट होनी है वो इस तरफ जा रही है। तो क्या किया इन्होंने, दे डिडंट रियलाइज कि एप्पल ने अपना इतना सा इफेक्ट जो है वो तक पेटेंट करवाया हुआ है, उसका तक के कॉपीराइट उन्होंने लिया हुआ है कि कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। एंड व्हाट हैपेंड देन, हुआ ये कि एप्पल ने एक बहुत ही हैवी चार्ज लगा दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारा ये इफेक्ट चुराया है और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैमसंग वालों को $1 million में जो है वो फाइन पे करना पड़ा। वो अपना केस हार गए।
और फिर क्या किया उन लोगों ने, अब उन्होंने तो काफ़ी सारे मिलियन डॉलर्स पे तो करने थे, उन्होंने इसको भी एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। उन्होंने क्या किया कि एक एक कॉइन जो है ना, 3 के 4 ट्रक्स ना, ट्रक्स में भर कर बोरियों में, और उन्होंने कॉइन्स की सूरत में अपना जो फाइन देना था एप्पल कंपनी को वो भिजवाया। अब द मोमेंट क्या हुआ, वो हाइप इतनी ज़बरदस्त क्रिएट हो गई कि जी टेलीविजन्स जो हैं और जितने भी न्यूज़ है सब के सब ना, पहले तो बड़ी बदनामी हो रही थी सैमसंग की कि सैमसंग जो है केस हार गया है। और फिर जब सैमसंग ने कॉइन्स में भेजा तो हर कोई फ्री की पब्लिसिटी शुरू हो गई, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर और हर जगह पर जी कि एप्पल को उसने एक एक कॉइन में जो है अपना टैक्स अदा किया, और जी कब जब पहुंचता है तो एप्पल वाले के आगे ढेर लग गया एक उसमें, और वो एक एक कॉइन गिन रहे हैं बैठकर। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अगेन ज़ीरो मार्केटिंग फॉर देम। 1 रुपया भी लगाए बगैर, मतलब जो उन्होंने टैक्स दिया था उसी के बिहाफ पे उनकी इससे ज़बरदस्त डबल मार्केटिंग हो गई। सो these are the kind of rules, like in business, like you have to take your even downfall as an opportunity, and you have to create opportunities for yourself from the downfalls as well in business. So in short, कहने का मकसद यही था कि you can't copy that, so आपको आप किसी का नेम भी कॉपी नहीं कर सकते at any cost. If the registrar is satisfied with documents, then he will issue certificate of incorporation. Private limited company can start its business after receiving certificate of incorporation, right? तो फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, और कंपनी जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। सो नेम ऑफ कंपनी अवेलेबिलिटी अगर आप चेक करना है तो कंपनी लॉ डिवीज़न की साइट पर आप जाकर कंपनी नेम सर्च करेंगे। इसका इधर आप अपना नेम लिखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि कोई नेम ये और किसी का नेम तो रजिस्टर्ड नहीं है, ये सिर्फ आप ही रजिस्टर कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू कैन चेक देन। ठीक है, जो अगर नो नेम फाउंड होगा जो आप नेम लिख रहे हैं तो देन हियर यू कैन गो, देन यू आर फ्री एंड यू नो दैट your name doesn't exist, so you can continue with that. 4th स्टेज में आपने कमेंसमेंट स्टेज में क्या करना है कि अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। उससे पहले कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आना चाहिए। अ कंपनी सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार, प्रॉस्पेक्टस एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन और डायरेक्टर्स शेयर्स, उसके बारे में वहाँ पर सारा ये चीज़ें सबमिट कर देते हैं। And then after verifying these documents, registrar issue a certificate of commencement and then a business can be started. अगर आपने देखा हो अक्सर जो खासकर मदीना मार्केट में जाएं पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जितने बर्गर वाले हैं और जितनी शॉप्स हैं फोटो स्टेट की, तो जाएं तो वहाँ पर ना एक सर्टिफिकेट सा लटका होता है जो कि उन्होंने फ्रेम करवाया हुआ है, और उसके बिहाफ पे वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट शोज़ दैट वट एवर बिजनेस दे आर रनिंग इज़ बेसिकली रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर हुआ हुआ है, दे वो अपना टैक्स भी पे करें और प्रॉपरली गवर्नमेंट की तरफ से। सो अब नेक्स्ट टाइम अगर गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आकर वहाँ पे चेकिंग करते हैं, सो दे वॉन्ट पुट एनी काइंड ऑफ फाइन ऑन देम बिकॉज दे आर द टैक्स पेयर्स ऑलरेडी। सो चेकिंग इस तरह बिजनेस की प्रॉपर होती है। फिर जो इसमें रजिस्टर हो जाता है ऑब्वियसली वो फिर उनका एनटीएन नंबर, या तो उनका उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेम पे एनटीएन नंबर होता है, या उनका एनटीएन होता है, या कंपनी का एनटीएन होता है। सो इसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो पेमेंट भी की जाती है। वट एवर दे आर अर्निंग अकॉर्डिंग टू दैट दे पे टैक्स एज so this chapter is completed now. If in case there is anything left, सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए आपको ये उसके अंदर रजिस्टर करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अपनी कंपनी बनाने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डन, ठीक है, और ये 2 डॉक्यूमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है स्टेज पे बनाते हुए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ सेशन इसका मेन डॉक्यूमेंट है। फीचर्स इसके फिर आप लोग देख लें,
कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम सेशन अच्छी तरह देख लें. नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है. सो ये नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी क्लॉज. एल्ट्रेशन लानी है वो में तो क्या करना है. ठीक है. फिर आर्टिकल ऑफ सेशन आ गया. एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ.